Okay, so now we have properties of inverse trigonometric functions. अब स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी से। जैसे आपके पास में नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब हम बात करते हैं तो आपके पास में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी कि जो साइन थीटा होता है ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है। फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी आपके पास में कि कॉस थीटा जो होता है ये 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, राइट, जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी। tan थीटा हमारे पास में 1 अपॉन cot थीटा के बराबर होता है। बट these identities were related to the trigonometric function. We have to study the inverse trigonometric functions. चेक करते हैं कि किस तरीके से हम लोग बेसिकली है ना साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, है ना। जब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें। फर्स्ट लेट अस हैव y इक्वल टू साइन इनवर्स x, right? So by the property of inverse we can do this thing. We can bring this sine inverse to the left hand side and it will become sine y. Means it will become like this, sine y equals to x. एंड यही चीज हम लोगों ने कब सीखी थी, जब मैंने आपको वो डोमिनो रेंज का कंसेप्ट समझाया था कि वो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को रिवर्स कर दिया, ठीक है ना। नाउ वी हैव sin y इक्वल टू x। नाउ व्हाट वी नो, इस sin y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cosec y इक्वल टू x। नाउ डू वन थिंग, cosec इसको रेसिप्रोकल कर दो वापस से, मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, cosec y इक्वल टू 1 अपॉन x। अब अगर मैं cosec को वापस से राइट हैंड साइड में ले जाऊं इन फॉर्म ऑफ इनवर्स तो मेरे पास में आ जाएगा y इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन x। ओके, सो इफ यू विल सी दिस स्टार्टिंग स्टेप, इसमें sin इनवर्स x भी y के बराबर था और यहाँ पे cosec इनवर्स x भी y के बराबर है। अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। Therefore we can say that sin inverse x is equal to cosec inverse 1 upon x. Or you can write it down in the reverse manner also. Cosec inverse x equal to sin inverse 1 upon x. This is how reciprocal things happen in inverse trigonometric. Okay. Okay, so let's try the second property. We have this thing that y equal to cos inverse x. Now bring cos inverse to the right hand side and it will become cos y. Cos y equals to x. Now we know that cos y is equal to 1 upon sec y equal to x. Reciprocal both the sides. You will get sec y equal to 1 upon x. And you will get y equal to sec inverse 1 upon x. Right? So from this thing that y equal to cos inverse x and y equal to sec inverse x, we can write it down that this cos inverse x is equals to sec inverse 1 upon x. Okay, so let's go for the third one. अब इसमें हमारे पास में आएगा y equal to tan inverse x। आप पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो, पैटर्न सब में सेम ही आ रहा है, तो चेंज नहीं हो रहा, राइट। यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा tan y equal to x। You can write it down tan y as 1 upon cot y equals to x. Reciprocal both the sides, you will get cot y equal to 1 upon x, or you will get y equal to cot inverse 1 upon x. And from this and this, we can say that this tan inverse x is equal to cot inverse 1 upon x. Okay. So these are the first three properties of inverse trigonometric functions. Okay. Now we have this fourth property, which goes like this: that sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x. Now we have taken out this minus sign outside the sin inverse operator. Okay. How can we do this? The reason is I'm going to show you the proof. Okay. हमें दे रखा है कि y जो है हमारे पास में sin inverse minus x के बराबर है। Okay, I want your participation too in the proof of this thing. Okay, so we can say that sin y will be equal to minus x, right?
just shift this minus sign towards the left hand side. What you will get? That minus of sin y will be equal to x. Now we know one thing, that sine of minus x is equal to minus sin x. This thing we have studied in class 11. The first property was this only. So we can make this minus sign with the y. It will become sine of minus y equal to x. Now shift this sign in the form of inverse. We will get minus y equal to sine inverse x. Just cross multiply this negative sign. We will get y equal to minus of sine inverse. Now we started with y equal to sine inverse minus x and we ended up with y equal to minus sine inverse x. Therefore we can say that sine inverse minus x is equals to minus sine inverse x. So this is how you can prove this property. Right? Let's move to the fifth one. Let's try for cos inverse x. Or you can try, the same thing can happen for cosec inverse x also. But I would like to try for cos inverse minus x, but for cos inverse minus x we have something else. चेक करते हैं क्या है हमारे पास में. ये हमारे पास में होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. अब इसमें पाई माइनस क्यों आया, इसका माइनस बाहर क्यों नहीं आया, अभी आपको वो भी पता पड़ जाएगा ना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए. चेक कर जाना कैसे, कब, क्यों, किस लिए होगा. Again we will start with the same step, that let y equal to cos inverse minus x. Right, just write it down in the form of cos y equal to minus x. Right, shift this minus sign to the left hand side. It will become minus cos y equal to x. Now we know that this cos of minus x is equal to cos x. So we cannot insert this negative sign with the y. What we need to do is that cos of pi minus x is equal to minus cos x. The same concept we use here also. Solving out this question, this doubt. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, cos of pi minus y equals to x. अब इस cos को भेजेंगे ना उधर अपन, ये बनेगा pi minus y इक्वल टू cos inverse x. अब cos inverse x को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करना, माइनस y को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करना. So ultimately you will get pi minus cos inverse x equals to y. Just see first step, just see the last step. Both are equal to y. Therefore, we can say that cos inverse minus x is equals to pi minus cos inverse x. Okay. Now we will try tan inverse x. For tan inverse x, we are going to try this one. Y equal to tan inverse minus x. So I'm not writing down the identity. I'm just starting with the first step, and eventually in the end we will going to get what we want. Okay. यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan y equal to minus x, or we can write it down as minus tan y equals to x. Now we know that tan of minus y is equal to minus tan y. Okay, इसका भी रीजन है हमारे पास में, 11th क्लास में सिखाया गया था, हो सकता है भूल गए हो तो दोबारा सीख लेना भले. हमारे पास में अगर माइनस tan y है, इसको हम माइनस का sin y अपॉन cos y लिख सकते हैं ना. अभी ये माइनस है तो sin y के साथ जाएगा, cos y के साथ जाएगा, cos y के साथ जा नहीं सकता क्योंकि तो पाई माइनस करना पड़ता है, एंगल चेंज हो जाएगा जो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें y चाहिए. साइन के साथ भेजते हैं ना, ये आपका बन जाएगा sin ऑफ माइनस y. अब मेरे को एंगल अभी भी सेम चाहिए ना, तो मैं इसको सीधे cos ऑफ माइनस y ले सकता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली cos ऑफ माइनस y तो मेरे को cos y मिलना है, तो फर्क पड़ेगा नहीं. दिस विल बिकम tan ऑफ माइनस y. Basically tan of minus y is minus tan y, right? So we can write it down as tan of minus y equals to x, or minus y equals to tan inverse x, or y equal to minus tan inverse x. So again, by looking at first and last step, you will get the
result. The result is that tan inverse minus x is equal to minus tan inverse, right? तो इसको साइड में ही पर्दे में डाल दिया मैंने, इसको देख लेना. Okay, so let's go for the next one. 7. कि हमने साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स कर लिया. अब हम कॉसेक इनवर्स के, अब कॉसेक इनवर्स भी देखो कोई बड़ी चीज नहीं है, हम कर सकते हैं. लेट इट बी, हम पूरा पूरा डिराइव कर लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात. y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, सॉरी कॉसेक इनवर्स माइनस x, है ना. तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा कॉसेक y इक्वल टू माइनस x. बहुत बढ़िया, y माइनस में भेज देना. minus of cosec y equal to x. Now we know it is the reciprocal of sine only, so it will become cosec minus y equal to x. Or we can say that this minus y equal to cosec inverse x, or y equal to minus cosec inverse x. Again, by looking at the first and last step, we can conclude that cosec inverse minus x is equal to minus cosec inverse x. Okay, so these are the first four observations, first four properties. Let's move to the next one. 6, 7, 8, right? Now we have sec inverse x. So y equal to sec inverse minus x. So we can write it down as sec inverse, sorry. We can write it down as sec y equal to minus x. Again, just cross multiply this negative sign to the left hand side, and you will get minus sec y equal to x. Now we cannot directly insert this negative sign into the y into the angle, because we know this is the reciprocal of cos y. So we need to write it down in the form of sec pi minus y, as we have done earlier in the identity of cos inverse x, right? Now this will become pi minus y equal to sec inverse x, or I can directly write it down as y equal to pi minus sec inverse x. Therefore, we can say we have this result with us, that sec inverse minus x is equal to pi minus sec inverse x. Okay. Let's move to next one. Most probably the last one. We have done with sine inverse, cos inverse, yes, cos inverse, tan inverse, cosec, sec inverse. Now we are left with cot inverse. Okay. So y equal to cot inverse minus x. So we can say that this cot y is equal to minus x, or we can say that minus of cot y equal to x. यहाँ हमें कुछ सोचना पड़ता है. अब हमें यहाँ पे क्या सोचना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ. हो सकता है कि आपके दिमाग में सिंपल सी चीज आ जाएगी कि हाँ माइनस को भी इस बार अंदर ले लेंगे, साइन के साथ में काम हो जाएगा और हम लिख देंगे, बट नहीं. यहाँ ध्यान से देखो भाई, हम इनवर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ रहे हैं. हमें पता है कि जो आपके पास में कॉट इनवर्स एक्स की जो आपके पास में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो हमारे पास में होती है 0 से लेके पाई. तो वी वांट कि हमारे पास में y की वैल्यू जो भी है वो इसके बीच में ही है. So we cannot use this negative angle. That's why we need to transform it in the form of cot pi minus pi. And we have taken care of this thing in remaining operations also. But वहाँ पे क्या डायरेक्टली हो पाता है, इसलिए वहाँ पे आपको बताया नहीं, बट यहाँ पे आपको बताना जरूरी है, वरना यहाँ पे आप लोग थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे चीज. Pi minus y is cot inverse x, or we can say y equal to pi minus cot inverse x. And we have this conclusion. Therefore, cot inverse minus x is equal to pi minus cot inverse x.
Now in three inverse trigonometric functions, we have this thing pi minus, and pi minus. That is cos inverse, sec inverse, and cot inverse. In the rest of the three inverse trigonometric function, we can directly take out negative sign outside the domain. Okay, so this thing you need to take care of while using these properties. But first of all, what you need to take care is of the principal value branches. जो भी हम लोग वैल्यूज लेते हैं, जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, जो भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सब कुछ डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग्स में होना चाहिए। इसका ध्यान रखना, इसके बाहर नहीं जा सकता।